Yeah, thank Yes. you. So सो हम लोग पाइपलाइंस कल क्रिएट करना सीख चुके हैं। पाइपलाइंस के थ्रू मॉड्यूलराइजेशन तो हम ऐड कर लेते हैं अपनी ओवरऑल एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के अंदर, या मशीन लर्निंग का जो भी हमारा फ्लो बन रहा होता है। लेकिन अब वंस वी हैव दैट ट्रेन्ड मॉडल थ्रू आवर पाइपलाइन, तो उसके बाद उस मॉडल को हमने एक्चुअली सर्व करना है ना अपनी किसी एप्लीकेशन के लिए। Our goal is to be able to use that model to generate value in production. और प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो किस्म के सिनेरियोज आ सकते हैं, रियल टाइम एंड बैच सिनेरियोज, राइट? एंड दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट इनकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है ऑफ रियल टाइम सिनेरियोज, of batch inference scenarios, and how to create real-time and batch inference pipelines through Azure machine learning service, और कैसे उनको हम मैनेज करेंगे, कैसे उनसे हम प्रेडिक्शंस जनरेट करवाएंगे, कैसे हम उन प्रेडिक्शंस को सर्व करेंगे, राइट? So first of all, we'll talk about deploying models as a real-time service. Not all applications of machine learning call for real-time service deployments. जो अलबत्ता जो सर्विसेज आपकी टाइम क्रिटिकल होती हैं उनके अंदर you will definitely need to go for real-time service. So real-time service है क्या? आपकी एक वेब सर्विस बनी होगी probably, और उसको आप जिस मोमेंट के ऊपर हिट करेंगे उसी मोमेंट के ऊपर मॉडल आपकी आपने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसके ऊपर प्रेडिक्शंस जनरेट करेगा, और प्रेडिक्शंस जनरेट करने के बाद वो आपको इमीडिएटली रिटर्न कर देगा। वेयर इज दिस नेसेसरी? अगर आपने अगर कंसिडर द सिनेरियो, जैसे आजकल काफी स्मार्ट सिटीज की एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं ना, तो स्मार्ट सिटीज के अंदर हमने मुख्तलिफ अपने शाहराहों के ऊपर, अपने डिफरेंट हाईवेज के ऊपर हमने कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, और वो मॉनिटर कर रहे हैं मुख्तलिफ गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं, राइट? तो आपका एक मशीन लर्निंग मॉडल है which is just reading the number plates of any cars passing by, और आपकी पुलिस ने मे बी अरेस्ट वारंट जारी किया है किसी बंदे के लिए, या दे आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन नंबर प्लेट in the city, and they want to catch that guy as soon as possible. Now, what do you think will be more apt in this use case scenario? इसके अंदर बेहतर ये होगा कि हम सारे दिन की वीडियो पहले एक बार रिकॉर्ड कर लें और सारी फिर रात को बैठ के 1 घंटे में उसे प्रोसेस करें एंड देन आइडेंटिफाई कि वो नंबर प्लेट कहीं देखी गई है, या जिस टाइम वो वहां से गुजर रही है हम उसी टाइम देख सकें? I'd say that it would be the second scenario, कि जैसे जैसे वीडियो फीड आ रही है हम उसी वक्त उस वीडियो फीड को प्रोसेस करें। We read out all the frames. From the frames we read out all the number plates, and as soon as we get a hit on that number plate, we identify it to the authorities, right? So that's a little bit about where you would want to use, where you would want to deploy a machine learning model as a real-time service, as opposed to batch service, which would be processing a large batch of data after a certain time period. Maybe आप इसे एक पूरे दिन के बाद process कर रहे हैं, या sometimes in some applications, some companies जिनके इतने ज़्यादा time sensitive processes नहीं होते, they even process their batches on a monthly basis or a quarterly basis, sometimes even on a yearly basis, right? So how to deploy a model as a real-time service? So first thing to do is we register a trained model, right? और ये चीज हमने कल की अभी, we trained a model, then we registered it in our workspace, and the second step to do is we define an inference configuration. So just like कल हम अपनी ट्रेनिंग पाइपलाइन के लिए एक कंप्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहे थे,
जिसके अंदर हम उसे एक एंट्री स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते थे और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे. जस्ट लाइक दैट हम एक इन्फ्रेंस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे. द ओनली डिफरेंस इज इन्फ्रेंस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइनिंग फॉर स्लाइटली डिफरेंट कंप्यूट टारगेट्स. तो जैसे हमने कल कंप्यूट टारगेट्स के अंदर डिस्कस किया था दैट and Mr. Numan also shared in the class that जब हम जब हम इन्फ्रेंस के लिए डिप्लॉय करने जा रहे होते हैं तो हम डॉकर टाइप सर्विसेज को यूज करते हैं जिनका मकसद ये होता है कि जल्दी से जल्दी उसकी डिप्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके और we can move at a faster pace when we are either deploying or if we are scaling up or scaling down, right? So that is the only difference between inference configuration and the previous configuration we've created, but the underlying components needed are the same. We need an entry script जो कि आपकी कोई ना कोई scoring script होगी. Now the scoring script will not need to train the model, it will just need to load the model and use that model to generate predictions and be able to return those predictions, right? Our environment is the same as what we previously discussed, जिसके अंदर हम अपनी conda dependencies के through या pip dependencies के through हम packages add करते हैं अपनी environment के ऊपर और उन packages को use करते हुए we make an environment that can do all that scoring, right? जो भी आपकी machine learning code की dependencies हैं वो उस environment के अंदर आपकी होती हैं. So other than the inference configuration, what we need is a deployment configuration. Or deployment configuration is just the compute things, right? You set up कौन सी compute है जिसके ऊपर service deploy हुई होगी. Is it going to be an IoT device? Is it going to be an inference cluster in the machine learning service, right? Or once we have done all these steps, then we can move on to deploying the model using our inference configuration and our deployment configuration. We have the scoring script, we have the environment, and we have the compute. So we can use these three things to deploy the model. Now, let's talk a bit about inference configuration. और inference configuration के अंदर जिसे हम इसको यूज करते हुए जो हम entry script create करेंगे, उस entry script के अंदर there are two main parts of that entry script. We need two functions. We need to define two main functions in that, or those are init and run. So init function, just like in any other programming languages, you might have seen init functions. Those are just run on initialization, right? जब आप instantiate करते हैं इस service को या जब आप initialize करते हैं इस service को, this is only going to be run once, right? तो इसके अंदर आप वो once only commands जो है ना वो आप describe कर सकते हैं. मसलन अगर आपने model path को अगर hard code करके वहाँ से get करना है तो you can do that here. या फिर अगर आपके कुछ thresholds हैं जो कि आप कभी भी छेड़ना नहीं चाहते, you can put them here and use them in the other function later on, right? दूसरी चीज जो आपका main सारा का सारा आपका matter आएगा, which is going to produce this actual scores, is going to be in the run function, and the run functions and the run function takes in some input, which is the raw data, and uses that data to produce predictions and returns it to the main program, or आपकी service से ये predictions return हो जाएंगे. So इन दो functions के around जो बाकी की web service create करना है या इसके around जो बाकी का support code है, that is totally abstracted to Azure. वो आप that is not the developer's headache anymore. That is not the headache of a machine learning engineer anymore. Or all the machine learning engineer has to focus on is producing the scoring code, and that's it for him.
The other thing for the inference configuration is the environment. और environment के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया है. इस environment class के थ्रू आप dependencies वगैरह और packages manage किया करते हैं उस जो required है उस model को run करने के लिए. और what you will then do is once you've created an environment, then you can serialize it to a string and save it as a YAML file maybe, or उस YAML file को basically inference configuration के तौर पे use कर सकते हैं. So just like it's shown in the code below कि आपने conda dependencies import की, आपने अपनी एक environment create की, उसके through उसके अंदर कुछ packages add किए, scikit-learn का package add किया, and then once you've created that environment, उसके अंदर packages add कर चुके हैं, आपने just एक path create किया और उस path के अंदर serialize कर दिया अपनी environment को, and then you save that, right? और अब ये YAML file जो है वो usable as an inference configuration. So once you like created that inference configuration, उसके अंदर आपको यही दो चीजें चाहिए, environment और आपकी entry script, और इन दोनों को आप wrap कर देते हैं into an object which is the inference config class, और इसके अंदर आप रन टाइम डिफाइन करते हैं अपना कि कौन सा पाइथन का वर्जन आप यूज करने जा रहे हैं, कौन सी आपकी सोर्स डायरेक्टरी है, जो एंट्री स्क्रिप्ट आपने पहले स्टेप में डिफाइन की थी, और जो आपने एनवायरनमेंट की YAML फाइल क्रिएट किया वो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर देते हैं. एंड देन दिस इन्फ्रेंस कॉन्फ़िग इज यूज्ड टू क्रिएट द रियल टाइम सर्विस, और उस सर्विस के ऊपर हम आते हैं. So now that we have the script और environment वगैरह भी हमारी सेट हो गई है, तो उसके बाद we must also declare the compute targets, right? और compute targets हमारे create होते हैं using the deployment configuration. और deployment configuration के अंदर हम मुख्तलिफ इसके compute targets वगैरह सेट कर सकते हैं. और I don't know if you would remember this from the previous one of the previous sessions or not. There are two main options when it comes to deployment options for inference. Inference के अंदर हम Azure compute instances use कर सकते हैं. Sorry, Azure container instances use कर सकते हैं, या Azure Kubernetes service का cluster use कर सकते हैं. और इन दोनों में से Azure Kubernetes का जो Kubernetes service is more apt for your production settings and for your dev test environment, जहाँ पे आप real time service को वहाँ पे आप deploy करके देखे होंगे, उसके लिए आप ACI वही Azure container instances use कर रहे होंगे. और इन दोनों के अंदर large scale फर्क ये है कि AKS जो है आपका जो Kubernetes service, that is more scalable, that is more robust, और compared to that ACIs they don't scale as well. वो आपके छोटे workloads को तो कर सकते हैं. दोनों types of services जो हैं वो Docker type images को use करके अपना एक containerized किस्म की service deployment create करते हैं, but AKS is recommended for your large scale production settings. So जो आपके पास यहाँ पे example दी गई है, that is the AKS cluster, जिसके अंदर हम so Azure की compute के अंदर से you can use AKS compute, you can also use ACI compute, which is what we are going to use in when we go to the demo, when we go to the lab. जी नुमान साहब, आपका कोई क्वेश्चन? ओके. एक्सक्यूज मी, कल वो माइक पर अनम्यूट था. अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा था कि जब हम अपनी वो बना रहे होते हैं ना वर्क स्पेस, उसी वक्त हम जब अपना कंप्यूटर इंस्टेंस बना रहे होते हैं
फ्रंट एंड के ऊपर, तो वहीं पे ऑप्शन आता है कंप्यूट क्लस्टर का भी और इंटरफेस क्लस्टर का भी, ठीक है। और अटैच जो कंप्यूट है वही, ये तीनों चीजें हम वहां पर भी इनको ग्राफिकली भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। कंप्यूट इंस्टेंस, कंप्यूट जो क्लस्टर है बेसिकली this is for management of our virtual machines. Actually, I wanted to add something in whatever you have explained now. तो मैं कह रहा था कि ये टॉपिक चल रहा है तो उसमें ये मैं 2 लाइनें इसमें मुझे थोड़ा सा ऐड कर दूं। और जो हमारे जितनी भी सारे के सारे डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्विसेज होती है ना, वो सारी की सारी इसमें हमारा जो इंटरफेस क्लस्टर है ना, इसके अंदर ही वो चल रही होती है। और हम जब वर्कप्लेस अपनी बना रहे होते हैं ना, हम उस वक्त भी इनको इसके साथ जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट जो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो कहता है कि सेम साइड जो ये वलीद साहब कर रहे हैं ना, इसमें ये जो प्रोग्रामेटिकल ये इसमें जरा एरर पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस थोड़े जरा कम होते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ऐड इसमें करना चाहता हूँ। राइट। और वो डिजाइनर जो इंटरफेस है which is the graphic interface, जिसके थ्रू हमने पहली लैब के अंदर भी थोड़ा बहुत एक मॉडल क्रिएट करके डिप्लॉय करके देखा था, दैट इज स्टिल इन द टेस्टिंग फेज। मतलब वो उसकी बीटा टेस्टिंग वगैरह चल रही है और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली कोई ना एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं। 1-2 महीने के अंदर वो टोटली कभी कभार अपनी पूरी इंटरफेस को रिवैम्प भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बहुत ज्यादा जो है ना इस कोर्स के अंदर फोकस इस वजह से नहीं करना चाह रहे क्योंकि आज आप कोई चीज उसके ऊपर सीखेंगे ना, यहाँ पे मसलन if I show you how to create end to end pipelines in that, या फिर मैं अगर मसलन आपको वहाँ पे डेटा ड्रिफ्ट या कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वहाँ पे मॉनिटर करना बताऊं, तो हो सकता है कि जस्ट नेक्स्ट मंथ वो अपनी थोड़ी सी वहाँ पे चेंजिंग कर दें और जो आपने सीखा हो वो आपको रीडिस्कवर करना पड़े, रीलर्न करना पड़े। द SDK साइड इज मच मोर रोबस्ट और इसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंट आपको चेंजेस वगैरह नहीं मिलेंगी एंड दे आर मच मोर मैच्योर सर्विसेज। अच्छा है, carrying on with our deployment configuration, AKS compute की आप provisioning सेट करते हैं कि कौन से रीजन से आपने लेनी है, क्या क्लस्टर नेम होगा, कौन सी वर्क स्पेस के अंदर क्रिएट हो रहा है। You create that and you just add that to the AKS web service की deploy configuration के अंदर you just add how many cores you're going to need, how much memory you're going to need, and then you just attach that when you are deploying the model. So how to deploy the model once you've created the deployment configuration and the inference configuration? So it is a bit different to what we have been doing so far. What we have been doing so far is we used to create experiments. We used to create machine learning experiments जिनके साथ हम अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स वगैरह अटैच किया करते थे through either estimators or through just Python scripts या pipelines के through, right? But when it comes to inference, then you have the service, the model class जिसको use करके आप service deploy करते हैं rather than running an experiment। और service के अंदर आपने सिर्फ अपना जो आपने मॉडल ट्रेन किया हुआ है वो मॉडल आप अटैच करते हैं, आपने अपनी जो इन्फ्रेंस कॉन्फ़िगरेशन, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की होती है वो आप अटैच करते हैं, और जो डिप्लॉयमेंट का आपका कंप्यूट टारगेट है व्हिच इज योर प्रोडक्शन क्लस्टर और योर डेव टेस्ट क्लस्टर, वो आप अटैच करते हैं एंड देन यू डिप्लॉय दैट सर्विस, राइट? और once this service creates it gives you a REST endpoint, और उस REST endpoint के ऊपर again आप वेब रिक्वेस्ट भेज के आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसके थ्रू आप डेटा सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और सर्विस उस डेटा को प्रोसेस करके उसके ऊपर प्रेडिक्शंस जनरेट करवा के आपको रिटर्न करती है। सो हाउ वुड दैट लुक लाइक इन अ पाइथन कोड? जनरली उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन द डेटा, आपके पास
एरे फॉर्म के अंदर कोई भी डेटा आ जाता है, तो यू जस्ट डिफाइन इट देयर, आप उस डेटा को जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और सीरियलाइज करते हैं उसको, ताकि वो आपकी वेब रिक्वेस्ट के अंदर रैप किया जा सके। यू ऐड सम ऑथेंटिकेशन हेडर्स रिक्वेस्ट या जो भी आप हेडर्स हैं, आपको की वगैरह जो है वो सर्विस से मिल जाती है। when you create that service you can just call get keys on that, और उससे आपको keys मिल जाती हैं और उन keys को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। Once you've added the request headers, you just create an HTTP request, और उसके अंदर जो आपने serialize किया हुआ डेटा वो आप attach कर देते हैं और आप अपने request headers attach कर देते हैं, and then you get a response which you can just parse to get the actual predictions from that service, right? So it gets as simple as this when you have come to deploy a real-time service. Of course, ये वाला जो inference के लिए हमने code use किया है, this can also be translated into other other programming languages other than Python. We can also have these SDKs in not only R but also C sharp. So C sharp को यहाँ पे mention करना इस वजह से जरूरी है कि जरूरी नहीं कि आपको इन रियल टाइम सर्विसेज से डेटा लेने के लिए हमेशा Azure की मशीन लर्निंग सर्विस लॉन्च करके जुपिटर ही लॉन्च करना पड़े और जुपिटर के थ्रू ही आप इन रियल टाइम सर्विस से प्रेडिक्शंस लें। यू कैन आल्सो बाइंड दिस प्रेडिक्शन कोड टू योर एप्लीकेशंस में भी। आपकी अगर कोई सी शार्प की एप्लीकेशन लिखी हुई है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या समटाइम्स इवन you might need to get predictions from a mobile application, तो आप उन सर्विसेज के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। और बिकॉज दिस इज इन पाइथन, तो जो पाइथन के स्पेशली वेब बैकएंड्स लिखे होते हैं, इफ यू आर आपकी कंपनी के अंदर मे बी यू वुड बी यूजिंग Django और समथिंग लाइक दैट, तो उनके अंदर भी एम्बेड किया जा सकता है ये वाला कोड, ताकि आपकी वेब सर्विस के साथ आप इसे कपल कर सकें अपनी मशीन लर्निंग प्रेडिक्शंस को, और अपनी जो अपना आपकी जो भी वेबसाइट के ऊपर आपकी एक फंक्शनैलिटी है, एक जो आपका फीचर है मशीन लर्निंग का, वो आप ऐड कर सकें वहाँ पे। सो टू मूव ऑन, अब हमारे पास सेकंड सिनेरियो वही बचता है कि हम रियल टाइम इन्फ्रेंस तो हमने सेट करना देख लिया। द सेकंड सिनेरियो वुड बी कि हम मॉडल्स को बैच सर्विस के तौर पे ऊपर डिप्लॉय कर सकें। So first I'd like to discuss a little bit about the batch service पे तौर पे डिप्लॉय करने का सिनेरियो क्या होगा। सिनेरियो ये हो सकता है कि मे बी यू आर ए मार्केटिंग फर्म, राइट, और आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स रन की जाती हैं क्वार्टरली, या फिर आप कोई और कंपनी है और आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और आपकी भी या बाय एनुअली या क्वार्टरली या इवन मंथली you want to run some marketing campaigns, और आपके जो भी customer base है, that customer base obviously won't be scored on a real time basis. ऐसा तो नहीं होगा कि किसी कस्टमर ने जिस वक्त भी आके आपके साथ कोई नया बिजनेस किया, maybe he made a new purchase or signed up for a new service, at that same time you start marketing to that customer and try to send an upselling or cross-selling promotion at the same time. Usually when you are doing marketing and campaigns, those are done at intervals, at larger intervals, आपके monthly, quarterly, या फिर जो भी कंपनी की पॉलिसी चल रही है इन कैंपेन्स को टाइम करने की, उसके हिसाब से क्रिएट किए जाएंगे। एंड समटाइम्स इवन ये जो टाइम इंटरवल वाला क्राइटेरिया है, this is also sometimes set using machine learning. So हम machine learning की मदद से ये decide करते हैं कि what would be the best time interval to reach out to our old customers and try reactivating them. खैर,
that is a different sort of discussion. But the thing is, let's consider that uh, we need to score on a quarterly basis, right? So अगर क्वार्टरली बेसिस है, इसका मतलब है कि मुझे 3 महीने के अंदर सिर्फ एक बार कुछ शायद 1-1.5 घंटे के लिए अपनी कस्टमर बेस को स्कोर करने की जरूरत पड़े, which means that it does not make sense for the company to dedicatedly keep up the web service through all that time, right? So उस सिनेरियो के अंदर we want to be able to uh, use a batch service जो कि सिर्फ उसी वक्त डिप्लॉय की जाए when you need the actual scoring, right? और उसे आप schedule भी कर सकें कि okay, maybe automate भी उसे कर सकें, और when the time comes, then Azure should automatically load up the right models, load up the right data, and uh, at that time deploy the compute instances, compute clusters, and use those compute to first make predictions, save those predictions, and once it's done with the whole machine learning scoring workload, it should shut off the any compute services that you use to generate those scores, right? So uh, so the key idea is कि वो आपकी compute जो instances हैं, compute services हैं, those should not be retained longer than you need them, right? So that is the scenario for deploying model as a batch service. So let's talk a little bit about how to do that in Azure. So again, the steps are a bit similar to deploying a real-time service. We have to have a registered trained model in our machine learning workspace, और एक बार हमारी workspace के अंदर वो model saved है, then we also need to define a scoring script. So this is pretty much the same as the entry script, or uh, then we also need to define a pipeline with a parallel run step, right? So batch inference और रियल टाइम इन्फ्रेंस के अंदर फर्क ये है कि रियल टाइम इन्फ्रेंस के अंदर हम एक मॉडल सर्विस क्रिएट करते हैं, और जो बैच सर्विस है, लेट मी एक्चुअली करेक्ट दिस इज अ बैच सर्विस, राइट? सो जो हमारी बैच सर्विस होती है उसके अंदर वी डोंट क्रिएट अ मॉडल सर्विस, वी क्रिएट अ पाइपलाइन, और पाइपलाइन के अंदर हम यूजुअली ऑप्ट कर रहे होते हैं पैरेललाइजेशन हमारी मैक्सिमम हो सके, बिकॉज नॉर्मली इस तरह के जो बैचेस होते हैं दोज आर टू बिग टू हैंडल, there will be use cases जहाँ पे आप big data के साथ deal कर रहे हैं for producing this batch prediction. And if you are dealing with big data especially, then you will need a way to add some optimizations to be able to process that data faster. And if you need to process that data faster, the only way to go is go for parallel processing. और उसके लिए Azure ने आपके लिए already उस चीज को abstract एक class के अंदर wrap कर दिया है. You can just add a parallel run step to your pipeline, और वो parallel run step in the backend करता क्या है कि Spark की parallelization capacities को use करता है, और Apache Spark is then used to process your data in parallel, and we'll see a running example of this in a while. So once you've defined that pipeline, then you can run that pipeline anytime and get the step output, right? And pipeline एक बार आपकी define हो जाए तो you can also automate it, schedule it, and we'll look at the scheduling part later. So let's talk a bit about the parallel run step first, right? इसकी इंट्यूशन मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि मकसद इसका यही है कि आप पैरेलल बैच इन्फ्लुएंस कर सकें, और किसी भी डेटा सेट से जब आप डेटा को लोड करते हैं वो उस डेटा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें बिटवीन डिफरेंट नोड्स that you have in your compute cluster.
या जो भी आपका inference cluster है. Or once that data has been distributed between those nodes, they will independently score them using the same model, और उसकी जो भी output generate होगी, that will be then brought together and joined together, and you will be able to see the output as a whole. So parallel run configuration, that is the main object, that is the main class जिसके through हम अपनी script define करते हैं, अपना batch size, environment, compute targets, ये वाली सारी चीजें आप define करते हैं. As you can see in this coding example, आपने अपनी source directory, entry script, कितना आपका batch size होगा. So batch size, mini batch size के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चलूँ कि for those who are not familiar with mini batches is कि consider कि आपके पास requirement ये थी कि आपका जो data था that contained 10 लाख उसके अंदर रोज थी, राइट. वो 10 लाख रोज अब सारी की सारी सेम टाइम पे तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती बिटवीन, अगर आप कंसिडर करें आपका 2 नोड्स का भी क्लस्टर है, राइट. तो what you would do is कि अच्छा इन दोनों नोड्स के दरमियान we are going to distribute these 10 lakh rows, but even if those 10 lakh can't be sent at the same time to in one batch to that node, what we are going to do is define a mini batch size. So जो computer A की, जो node A की 10 लाख rows है ना, those 10 lakh rows would be streamed to that node in rows of whatever number we define here. So for instance, if the default value is 5, then the rows will be sent 5 at a time to any node, right? और इससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि how much compute load does any single node see at any single instance, right? और इससे आप you can prevent common problems like memory overload और आपकी जो ताकि आपके large scale clusters भी जो हैं वो भी आपके चोक ना आ जाए, right? तो so you define a mini batch size and you set an error threshold. I'll talk about this in the demo. Output action के आपने append करनी है rows अपने output data set के अंदर, या फिर आप different अलग-अलग files जा रहे हैं हर node से, अपनी environment बता देते हैं, अपनी compute target बता देते हैं, what cluster is there, or then you process count per node, how many processes are going to run on each of those nodes to produce that scoring, right? Or total node count as well. So once you've created this parallel run configuration, तो इस parallel run configuration को आप अपने एक parallel step के साथ bind करते हैं, और अपने parallel step के साथ bind करके you wrap that in a pipeline, right? So what can be done with a batch pipeline? We've already talked a little bit about this. अपने large scale processing, बड़े data sets की खासकर, if you're dealing with big data, you can distribute it, or you can do it more efficiently. You can publish the pipeline. You can use it with the REST endpoint, like we did yesterday as well. कि हमने एक pipeline create की, उसका REST endpoint create किया. Though that was a training pipeline जिसके साथ हमने कल काम किया था. But it still had a REST endpoint जिसको हमने जब invoke करके देखा, तो REST endpoint को hit करने से हुआ क्या कि उसी वक्त Azure machine learning service ने उस training pipeline को execute किया और एक नया version model का train करके store कर दिया. In exactly the same way, आपका जो batch inference pipeline का जो REST endpoint आएगा, what that is going to do is when you hit this endpoint, it is going to read the data from whatever path you have defined in your run script, in your scoring script, and it is going to use that to produce the scores, and once it's done,
finish off, right? And produce new outputs for your predictions. So the training pipeline produces a new version of the model. The batch inference pipeline produces a new version of your scored predictions, right? And you can also schedule this pipeline for periodic runs. So this is the gist of what we are going to do today. We're going to be using the same models that we have trained before. A beacon here, we are still sticking with that banknote service model, जिसके अंदर हम identify कर रहे हैं कि कौन सा banknote fraudulent है, unfraudulent है, और उसी classification model को we'll first deploy it as a real-time service, and then we'll be able to deploy it as a batch service. So that is what we're going to do today. Let's take a short break before we move on to the demo. And before the break, if anyone has any questions, I can perhaps